So we started about discussion about Rutherford experiment, right? So we have seen yesterday that there is a relation between impact parameter and scattering angle, right? So Rutherford, based on two assumptions, he has derived that angular scattering distribution. Okay, and this is basically denoted by n theta. Okay, so what is angular scattering distribution? Angular scattering distribution means number of scattered alpha particle at an angle of theta. So yesterday we have discussed about two assumptions. So based on this assumption, he has derived that angular scattering distribution, expression for angular scattering distribution n theta, that is, let me write first, n into ni, then t z square e to the power 4 divided by 8 pi epsilon naught square r square k alpha k square sin की power 4 theta by 2. Okay, so what is n theta here? N theta means, so let me write, explain. N theta means number of scattered alpha particle at an angle of theta. N, what is small n? Small n means number of atoms per unit volume of target. Target means gold foil. Ni means, capital Ni means number of incident alpha particle. T means thickness of gold foil. Z square. Here Z is what? Z is atomic number of gold foil or target. Then you have a R square. I'll explain what is R here. K alpha means what? K alpha means kinetic energy of incident alpha particle, and you know theta, right? Theta is scattering angle. Now what is R actually? So if you remember, you have a gold target, right? And there is a fluorescent screen, right? So R means the distance from the center of this target to the surface of this fluorescent screen. So we can write, can I write or you can write? So I can write here, n theta means number of scattered alpha particles at an angle of theta. N means number of atoms per unit volume of target. Target means what? You can mention here. Target means gold foil, right? Gold foil. Okay. Then you have Ni. Capital Ni means what? Total number of incident particles. Number of, or total number of incident alpha particles. And Z is what here? Atomic number of target. Okay. Or you can mention here
target he has used, that is gold foil. And for gold, what is the atomic number? कितना होता है? 79. 29. Exactly. Not visible. Okay. Okay. Gold foil, huh? Gold foil, and the atomic number of gold Z, that is how much? 79. Okay. And R you can write. R is the distance from center of target to surface of fluorescent screen. Okay. K alpha is kinetic energy of incident alpha particle. Okay. And you know what is theta? Scattering angle. Okay. So after deriving this formula, he was very much interested to see that relation between number of scattering particle with scattering angle. So he was very much interested to see this. So from this expression, what I can say that n theta is inversely proportional to 1 by sine the power 4 theta by 2, right? And from this expression, what we can conclude and what he has observed, that is absolutely correct. I mean, this derivation is absolutely correct because we know when theta is small, it means your particle, when theta is small, obviously B will be large, right? Sir, Yes. sir, my network is disturbed, so can you just explain angular scattering means what, sir? Angular scattering means number of particle scattered at an angle of theta. I mean, he tried to measure the number of scattered particle at different angle. Okay. Okay, sir. So what was that conclusion? That most of the particle was undeviated, right? Yes, sir. It means that angle is almost 0 or small, I can say. And from there, here we can conclude also from this expression. When theta is small, sine theta will be small. And when sine theta will be small, this factor will become large. So obviously, what he has observed, that is absolutely correct, right? Because जब theta आपका small होगा और undeviated होगा, number of particle will be large. सर वो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, प्लीज इधर लेफ्ट में लिख दीजिए. N theta proportional to or inversely proportional to 1 by sine की power 4 theta by 2. So when theta is small, sine theta will be small. We know for small theta, sine theta will be small, right? And when sine theta will be small or sine की power 4 theta by 2 will be small, the number of scattered particle will be large. I mean, at very small angle or at theta tends to 0, that number of scattered particle was how much? That is most of the particle, right? When theta tends to 0, number of scattered particle is maximum. When theta is large, sine theta will be large, right? So sine की power 4 theta by 2, this will be large. It means number of scattered particle at large theta will be 0. Small. At large theta, this factor will be large. So obviously, what I can say, the number of particles scattered at large theta will be small. And you can see
when theta is 180, so at theta equals to 180, sine 180 by 2, I mean sine 90. At this time, you will have maximum value of sine to power 4 theta by 2. And theta is 180 means back scattered, right? So at back scattered, you can see this factor is maximum. So it means at back scattered, that particle will be small. So from this expression, what we can conclude that at small theta, number of scattered particle will be large, right? At large theta, number will be small, and at theta equals to 180 or back scattered case, that number of particle will be, or number of alpha particle will be very less. And that was actually experimental observation. Okay. Now he has predicted that radius of nucleus as well, and that is by how he has predicted that. He has predicted by measuring the distance of closest approach. Sir, Yes. so here number of particles means After the interaction. nucleus after interaction. So you have a fluorescent screen, right? Yes, sir. Yeah, and you have a target, or I can say you have a target, right? An alpha particle is coming, right? So what he has observed? So n means what? After scattering. N means what? After scattering. So at theta tends to 0, that most of the particle will be undeviated, or I can say theta small के लिए क्या होगा? ये जो number है after scattering क्या है? Large होगा. At large theta, that number will be small. I mean minimum a very small number of particle is scattered at large angle. Yesterday we have seen that, right? Or that n theta will be small for back scattered case. I mean only 1 out of 20,000 was back scattered, right? Yesterday we have seen. So n theta means what? After interaction with target, that scattered particle. So this is called scattered particle, you know. Yes, sir. Yes, I understand. So he has predicted, Rutherford has predicted that size of nucleus also. By how? By measuring the distance of. Sorry, sir. Sir, theta equals to 180 backscatter particle, and theta would be Theta. maximum. What I'm saying, for backscattered case, theta will be 180, right? Yes, sir. So what I can say from this relation, n theta. N theta is means what? Scattered particle, right? So that is inversely proportional to sine the power 4, the sine की power 4 theta by 2. जब theta 180 है, then theta by 2 that 90. 90. In that situation, that this factor will be maximum. So if this factor is maximum, 1 by maximum will be minimum. So what does it mean? That number of backscattered will be less. Okay, minimum. So everything, whatever he has observed, that thing actually you can explain from this explanation expression itself. He has predicted the distance of closest approach, and this is important for your exam. So he has predicted that size of nucleus by calculating the distance of closest approach. Okay, and this is basically denoted by X. Okay, so suppose you have a nucleus. You have a nucleus of target, and that is your gold. So this is the nucleus of gold. And alpha particle having kinetic energy K alpha is incident. Okay, so initially that alpha particle is at far away from nucleus. At far away from nucleus. So in that situation, what will be the Coulomb potential energy when it is far away from nucleus?
At large R, what will be happen? So what I'm saying, you have alpha Zero. particle Zero. incident. Initially, it is far away from nucleus. Okay. So in that situation, we know potential energy is inversely proportional to R, and at R tends to infinity, this V will be 0. Now tell me, if this alpha particle is approaching that nucleus, if it is approaching that nucleus, now with decreasing the distance between nucleus and alpha particle, what will happen? With decreasing All the the kinetic energy will changes to potential. exactly, or I can say with decreasing the distance between nucleus and alpha particle, there will be increment of Coulomb repulsion, right? We know that Coulomb force is inversely proportional to 1 by R square. And why I am saying Coulomb repulsion? Because nucleus is having positive charge and alpha particle is also positive charge. जब ये न्यूक्लियस के करीब जाएंगे तो दोनों के बीच में R कम हो जाएगा, Coulomb repulsion बढ़ जाएगा. So if there is a increase of Coulomb repulsion, obviously the velocity of alpha particle will be decrease or increase. क्या हो जाएगा? Decrease. Decrease. Obviously it will be decrease. So if the particle is अगर इसका velocity decrease होगा, obviously k alpha क्या हो जाएगा? Small होता जाएगा. If the velocity of this particle is getting decreased with increasing with decreasing R, right? The velocity of alpha particle will be decreased by decreasing R. I mean when it is approaching that nucleus. Okay. So if the velocity is decreased, obviously kinetic energy will be decreased because we know kinetic energy is nothing but half mv square. तो मास तो अल्फा पार्टिकल का फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी स्मॉल होते जाएंगे. Why it is getting small? Because kinetic energy is basically converting to Coulomb potential energy. Kinetic energy is basically converting to what? Coulomb potential energy. So when it is coming close to the nucleus at a distance very close to the nucleus, what will happen? When it come very close to the nucleus, at this situation, what will happen? The velocity will be 0. At this situation, velocity will be 0. And this distance, when the velocity becomes 0, the distance between the center of nucleus and this point is called distance of closest approach. So it is coming close to the nucleus, its velocity is getting decrease. है ना? Decrease होते होते एक point आएगा जहां पे velocity 0 हो जाएगा. ठीक है? So इस point में क्या होगा? आपका velocity 0 हो जाएगा. So whole kinetic energy of this alpha particle will be converted to what? Electrostatic potential energy. Exactly. So what I can say, that kinetic energy of alpha particle, what I can say at x, the kinetic energy of alpha particle will be converted to potential energy, Coulomb potential energy, right? And what will be the value of Coulomb potential energy? Anyone, can you please tell me? At Sir, 1 x, upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. 1 upon 4 pi epsilon naught. Q1 is the charge of alpha particle, and that we Alpha know particle. 2e, right? 2 Q2 will be how much? 79E. Exactly. Z ZE. 7ze obviously, and z is how much? 79e, right? सर उस तरफ का दिख नहीं रहा है. हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ. भी कितना हो जाएंगे? कैमरा नहीं दिख रहा है? अब तो दिख रहा है ना? सर हाँ थोड़ा सा लेफ्ट में लिखिए सर, हाँ थोड़ा राइट में सर हो जाता है. हाँ ठीक है. हाँ सर अब ठीक है. ये तरह का कैमरा मूव कर दीजिए. हाँ, at x, what will happen? The potential energy will be how much? 1 by 4 pi epsilon naught 2e, that is the charge of alpha particle. Then Q2 will be the charge of gold nucleus divided by x. And that should be equals to kinetic energy of incident alpha particle. So from here, I'll get the value of x, and that will be how much? 1 by 4 pi epsilon naught, है ना? 2 into 79 e square divided by k alpha.
Is this clear? Is this clear to all? Sir, Yes. जो आपने जो डायग्राम एक्सप्लेन किया था, मेरे को प्लीज एक्सप्लेन करना। डायग्राम को हाँ। हाँ देखो, जब बहुत दूर है दोनों तो कूलम जो रिपल्सन है दैट विल बी 0 एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. When it is coming close to that nucleus are getting decreased, so obviously this force or coulomb force become increase. तो जैसे coulomb force बढ़ते जाएंगे, coulomb force किधर कम कर रहा है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, ऑपोजिटली कम कर रहा है. So when it is this alpha particle is approaching this gold nucleus, its velocity is getting decrease, है ना. जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जा रहा है इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है. तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होता जा रहा है ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएंगे, राइट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. So this kinetic energy getting reduced, and this kinetic energy is basically converted to Coulomb potential energy, because we know that Coulomb potential energy is how much, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r, right. जैसे जैसे r small होता जा रहा है, any particle making close to nucleus, r small होता जा रहा है, इसका मतलब potential energy बढ़ रहा है. So what I can say that when this alpha particle is approaching this nucleus with decreasing that r, kinetic energy is converting to potential energy. अब velocity decrease होते जाएंगे, एक point पे क्या हो जाएंगे, आपका velocity 0 हो जाएंगे, है ना. And this point is called distance of closest approach. At this situation, the distance between alpha particle and center of nucleus, that will be x, and this is x is your distance of closest approach. So after that what will happen? After that there will be backscattering. सर Hmm. सर आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है x इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Hmm. z into 79 by k alpha, Hmm. सर यदि वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, तो x इन्फिनिटी हो जाएगा. No. You are making mistake. K alpha is what? Again I am saying K alpha क्या है actually? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, जहां से छोड़ा गया है उस सिचुएशन का है ये काइनेटिक एनर्जी तो अल्फा पार्टिकल का वेरिएबल है ना. यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है. जैसे जैसे क्लोज आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. और इस सिचुएशन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है. तो जो आपका इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल जहां से छोड़ा गया था उस पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है, ये जहां से छोड़ा गया है, और यहाँ पे तो आपका 0 है. उसीलिए तो मैंने कंजर्वेशन लॉ लगाया कि जो आपका होल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट दैट विल बी सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल. मतलब यहाँ पे जो एनर्जी था उसका, दैट एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज कमिंग एट क्लोजेस्ट अप्रोच. अब बताओ, कैन आई आस्क ऑन क्वेश्चन, क्या ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच कर सकता है? No, sir, not possible. It is not never possible. It cannot touch that nucleus. Okay, so please let me proceed because it's getting delay. Sir, Yes. so this time this kinetic energy is changing into potential energy, na? Conservation of energy. Exactly, by conservation of energy. That's it. Okay, sir. By conservation of energy, kinetic energy converting to potential energy. That's it. यहाँ पे potential energy जो होंगे, that is coming because of losing kinetic energy of incident alpha particle. That's it. Kinetic energy is converting to potential energy. This potential energy arising because of loss of kinetic energy, and that loss is how much? K alpha. K alpha is the kinetic energy of initial alpha particle, और जहां से छोड़ा गया है, ठीक है. Now he has used that velocity of alpha particle, I mean initial velocity, that is I can write here 10 to the power 7 meter per second. And we know that mass of alpha particle, that will be how much? Anyone? So I can write that mass of alpha particle is nothing but 4 times mass 4 of times of proton. exactly. proton, And sir, 4 4 times proton का कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus minus 27. exactly. और क्या चाहिए आपको? Half mv square, right? And j do you know? So now can you calculate? The velocity is known or it is given? हाँ, velocity was known. Velocity जो जहां से Oh. छोड़ा गया था उस पॉइंट में velocity जो यूज किया था रदरफोर्ड ने, that is this 10 to one. the power 7. Okay, Yes, sir. yes. Now can you calculate?
So if you substitute all this value, you have 1 by 4 pi epsilon naught, that will be how much? 9 into 10 to the power 9. Z is, then you have 2 into Z 79. E square is how much? 1.7 into 10 to the power minus 19 whole square, right? And then you have what? K alpha. K alpha is nothing but a half mass of alpha particle, and that is how much? 4 into 1.67 into 10 to the power how much? 27, right? And you have V alpha. V alpha was how much? 10 to the power 7 chi square. 1 by 4 pi epsilon naught Z1 Z2 E square on by then K alpha is how much? Half M V square. Okay, so if you calculate this, you will basically get this value: 10 into 10.89 into 10 to the power minus 14 meter. Let me check. 10.89 into 10 to the power minus 14 meter. So what was that conclusion of this? क्या conclusion है बताओ? क्या conclusion है? Anyone? Sir, that the approx. So न्यूक्लियस का साइज तो इससे कम ही होगा मतलब. exactly, very good, very good. So he conclude that radius of this nucleus will be smaller than the distance of closest approach, or I can say that radius r of nucleus will be less than 10.89 into 10 to the power minus 14 meter. सर ये कैसे कंक्लूड कर दिया गया सर? अब इसको रेडियस कहाँ से मेजर करते हो? सेंटर से सरफेस तक. यस सर. और सेंटर से सरफेस तक जो डिस्टेंस है दैट इज योर कैपिटल आर, और Yes, sir. सेंटर से जो आपका ये पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सो दिस इज वो योर, इतना है. सो दिस Yes, sir, yes, sir, ये वाला बड़ा understand. होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये Understand, आपका sir. न्यूक्लियस को टच तो नहीं कर सकते हैं. इज दिस Sir, will this value changes for the heavy nucleus? एग्जैक्टली, इट विल बी चेंज. How? So the हेवी न्यूक्लियस मींस यू विल चेंज दैट जेड, राइट? Yes, sir. जेड अगर चेंज करोगे, है ना, अभी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर आपको पता चलेगा. Okay, sir. Okay, very good. You are proceeding faster than me. Okay, so let me solve our problem. He has asked a good question. So suppose you have used target you have used that is no longer gold but some heavy. For example, you have a target nucleus and that nucleus is basically made up of uranium 92-235. Uranium 92-235, and you have used K alpha particle, and the initial kinetic energy of this alpha particle, it is given. Initial जो kinetic energy है that is 5 mega electron volt. ठीक है? So you have a alpha particle, है ना? It is coming, है ना? So backscattered, sorry, आपको distance of closest approach करने के लिए कौन सा चाहिए? आपको backscattered वाला चाहिए, है ना? So this alpha particle is coming, making close to nucleus. अब इस सिचुएशन में आपको बताना पड़ेगा जो इनिशियल अल्फा पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिस टाइम यू चेंज दैट टारगेट. नाउ नॉट यू आर नॉट यूजिंग दैट गोल्ड टारगेट बट सम हेवियर, and that is made up of what? Uranium. Now can you please calculate what will be the distance of closest approach? Is this question clear to all? क्या क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का? Yes, Sir. Okay. Mass will be same, na, as that was given in the earlier question. Parminder, I have a class. Huh? Sir? Yes. Mass will be same, na, that was given in the earlier question. Mass, we don't need any mass here, right? Because you have a, that kinetic energy of alpha particle is given. So is there any necessary to get mass, or is it necessary to solve this question? Mass क्या necessary यहाँ पे? आपका distance of closest approach का formula क्या थे वो बताओ आप, क्या थे? 1 by 4 pi epsilon naught. If I am correct, then Z on
Z2 E square by alpha. Z1 क्या है? अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर, Z2 टारगेट का, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अल्फा पार्टिकल का. सो इफ आई यूज दिस 1/4 epsilon naught, इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे? 9 into 10 the power कितना होता है? 9, राइट? देन Z1 will be 2. Z2 कितना है? कितना है? सर Z2 92 सर exactly. 92 Great, very good. 92. Then E square 1.6 into 10 the power minus 19 का square. Okay, and then you have kinetic energy. Okay, so kinetic energy is how much? 5 mega electron volt. So mega to electron volt कितने में और कितना मल्टीप्लाई करोगे? 10 Mega power 3 10 to power 6. एग्जैक्टली मेगा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 6. फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है आपको, क्योंकि हमको कैलकुलेट करनी है. कौन सा यूनिट में कैलकुलेट करनी है? मीटर में कैलकुलेट करनी है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाओगे? 979 Electron Multiplied discharge. by 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो फर्स्ट यू हैव ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाओगे 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करोगे. So now everything we have substituted by SI units. Obviously, this unit will come here. What? In meter. Okay. So if you basically solve this, you'll basically get 5.3 into 10 the power minus 14 meters. Okay. So basically, that fellow asked a good question. So that distance of closest approach depends upon, actually, you see, atomic number of target. So if you take heavier target, obviously Z will be large. If Z will be large, X will be large. ऑर्डर हमेशा उतना ही रहेगा ना 10 power minus 14. Yes, why? Tell me. Why it will be same? Because nucleus is 10 power minus 15. I mean, since there we know that size of nucleus is actually of the order of, मतलब सारे जो न्यूक्लियस का साइज होता है -15 में होता है. तो obviously it is expecting that जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी होंगे सारे न्यूक्लियस का -14 में मिलेंगे. ठीक है. Statement is that now the mass of the Your voice is not audible to me. Can you please repeat? so the statement is that now about the mass and the atomic number something. Please repeat that. हाँ, I'm saying जो आपका न्यूक्लियस का साइज होता है, सारे न्यूक्लियस का साइज, इफ यू टेक हाइड्रोजन, इसका जो न्यूक्लियस का साइज होता है किस ऑर्डर में होता है? -15 में होता है. अगर आप यूरेनियम का भी लोगे किस ऑर्डर में मिलेगा आपको? -15 में मिलेगा, राइट? मीटर में. सो समवन आस्क दैट जो आपका ऑर्डर है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ऑर्डर तो सेम ही रहेंगे ना, जस्ट वैल्यू चेंज होंगे. सो आई सेड हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होगा आपका ऑर्डर सेम ही रहेगा, -14 में ही रहेगा. ठीक है, जस्ट वैल्यू जो है वो चेंज होता रहेगा, जैसे आपका न्यूक्लियस के लिए होता है, न्यूक्लियस रेडियस के लिए. ठीक है. सर पर जैसे जैसे मतलब बढ़ता है एटम का साइज, हाँ, वैसे वैसे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी एटम का बढ़ेगा साइज ना बढ़ता है. सर? मतलब वॉल्यूम एटम का या न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का. फिर तो सर जैसे जैसे मतलब न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बढ़ेगा ना? एग्जैक्टली बढ़ेगा, ओके सर. साइज बढ़ेगा. जैसे आपका मैं एग्जांपल दिया ना, वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का साइज लोगे, और यूरेनियम किसका बड़ा है? यूरेनियम का है ना. साइज तो यस बड़ा सर. है बट ऑर्डर तो सेम ही है ना. यस सर. ओके. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग अबाउट दैट न्यूक्लियर फिजिक्स. सो वी नो दैट mass of nucleus is measured in one unit, and that unit is basically called, तो न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं हम, कौन सा यूनिट में करते हैं? दैट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट.
and it is basically denoted by U. Okay, and how it is defined? That on atomic mass unit is nothing but mass of a carbon 12 atom divided by its mass number. Okay, so if you एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU. हाँ, ऑन AMU और यूनिट उसका जो सिंबल होते हैं, है ना, वो बेसिकली यू से यूज करते हैं, है ना। जब भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, देखना हर जगह पे यू यूज करता है, ये सिंबल है एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। सो ऑन एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट मास ऑफ ए कार्बन एटम डिवाइड बाय इट्स मास नंबर, ठीक है ना। सो इफ यू take that mass of a carbon atom and divide by mass number, you will basically get this number 1.66 into 10 the power minus 27 kg. Okay, so now how will convert? So this is your mass, right? This is all about your on atomic mass, 1.66 into 10 the power minus 27 kg. So can you convert this mass इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन? मतलब जो मास को हम लिखते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन, यस्टरडे आपको याद है इलेक्ट्रॉन का मास हमने लिखा था 0.51 ऑन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर. सो कैन यू कन्वर्ट दिस मास इन द यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर? हाउ विल कन्वर्ट? So this thing I'll again write 1.66 into 10 the power minus 27 kg. Now if I multiply by c square, I can do that. I can multiply by c square and I can divide by c square, right? I can do that. And c is what here? Speed of light. Speed of light in what? Meter per second. Speed of light जब बोलते हो तो पूरा बोल दिया करो ना. Speed of light जो है constant है हर जगह पे. Yes, sir. Speed of light in vacuum, water कहाँ पे है? In vacuum. Exactly. So this is 1.66 into 10 the power minus, है ना. मैं आपका परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, है ना, आपको सिखा रहा हूँ, डोंट वरी. ठीक है ना. तो ये आपका क्या है 1.66 into 10 the power minus 27 एंड c का मैंने वैल्यू रख दूंगा, कितना रखूंगा? 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड डिवाइड बाय c स्क्वायर. नाउ अब बोलो ये जो क्वांटिटी है इसका यूनिट क्या आ जाएंगे ऊपर वाला का? यह है मास इन kg एंड यू सब्स्टिट्यूट दैट c इन SI यूनिट. सो mc स्क्वायर क्या होता है? दैट इज नथिंग Energy. बट एनर्जी. सो दिस यूनिट विल बिकम इनटू जूल, ठीक है ना. नाउ जूल से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है, तो कैसे करोगे? Divide by 1.6 minus 9. Exactly 1.6 into 10 the power minus 19. Okay, अब दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा है? सर विजिबल नहीं है सर. ओके, मैं इधर लिख देता हूँ. कैमरा घुमा दीजिए थोड़ा. मैं इधर लिख देता हूँ ना, फिर गड़बड़ हो जाएंगे. मैं इधर लिख देता हूँ, यही आप दिख रहा है, देखो 1.66 into 10 the power minus 27, then 3 into 10 the power 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1.6 into 10 the power minus 19 into c square. So can you please tell me what will be the unit of this? ये जो क्वांटिटी है c स्क्वायर को छोड़ के इसका यूनिट क्या हो जाएगा? Mega electron volt. मेगा और इलेक्ट्रॉन में. अभी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे, बट एक आपको ऑर्डर मिल जाएगा 10 the power 6 का. अभी ये यूनिट किस ऑर्डर पे आएंगे? अभी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगा. क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड किए हो. सो दिस यूनिट विल बी कन्वर्टेड टू mega electron volt, but from mega electron volt you can convert to mega electron volt also, right? So basically you will get, if you solve it, you will basically get this number 931.5 into 10 the power 6 electron volt
per c square. And from here you can easily convert into mega. So 10 the power 6 electron volt is nothing but mega electron volt, right? So basically I can write 931.5 mega electron volt per c square. So in that way you can convert that So it is electronic 931.5. exactly Okay. 931.5 यहाँ पे है ना, मेरा पॉइंट जो है नहीं दिखता है, इतना छोटा लिखता हूँ, ठीक है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर. Now in that way you can convert that. If you remember yesterday मैंने लिखा था जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा था, है ना, बट आप लोगों ने पढ़ा होगा 9.11 10 to the power minus 31, राइट. सो दिस माइनस 31 kg होता है, उसको आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो इस वे में, है ना. कोई भी मास को अगर आपको पूछा जाएगा कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय c square and divide by c square, and then you have to divide by 1.6 into 10 to the power minus 19. Is this clear what I'm saying? हाँ ना बोल दिया करो. Yes, sir. ठीक है. Okay. Now I'll write that mass of different particle in different unit. So now if I talk about particle and mass in kilogram, mass in atomic mass unit, and mass in mega electron. फिर नहीं देख रहा है. ओके ठीक है, मैं थोड़ा और अरेंज कर लेता हूँ. पार्टिकल m मीन्स मास इन kg, ठीक है, मास इन kg, mass in atomic mass unit, U means atomic mass unit, and mass in mega electron volt per c square, ठीक है ना. तो बेसिकली आपको पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने के लिए, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने के लिए ये दोनों तो आपको चाहिए ही चाहिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का. प्रोटॉन का मास कितना होता है बताओ, मास इन केजी 1.6725 into 10 the power minus 27 in kg. न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.6750 into 10 the power minus 27 kg. In atomic mass unit 6750. Sorry, this is not 25 actually. Extremely sorry. This is not 5. This is 6. Okay. And if you calculate that mass of proton in atomic mass unit, that will be 1.00727. Okay. And mass of a neutron is 1.00866. And you know this, right? Mass of a neutron in proton in MeV per c square कितना आता है 938.28, and this is 939.57. So this mass of a proton and neutron, this number is really important for your exam, है ना. मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि याद करके रखो, बट इस बार TIFR में मैक्सिमम स्टूडेंट का एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है. दोनों सब लोगों ने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम कर लिया था, है ना, इसलिए उन लोगों का आंसर जो है गलत आया था. अब सबने मिस्टेक किया है, थोड़ा सा इनका फर्क होता है. ओके ठीक है ना. चौक लग गया, ठीक है. तो न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है प्रोटॉन से. हाँ न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है. दिस थिंग आई थिंक वी हैव लर्न इन पार्टिकल फिजिक्स ऑल्सो, क्योंकि प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना. प्रोटॉन का स्ट्रक्चर होता है 3 क्वार्क से बनते हैं, है ना.
पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे हम, अप डाउन, और न्यूट्रॉन बनते हैं अप डाउन डाउन, ठीक है ना। तो जो डाउन क्वार्क का जो मास होता है ज्यादा होता है, और डाउन क्वार्क जो है न्यूट्रॉन में 2 रहता है ना। डाउन क्वार्क का मास जो होता है दैट इज लार्ज एज कम्पेयर टू अप क्वार्क, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क है, प्रोटॉन में कितना है, 1 डाउन क्वार्क है, सो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये क्यों ज्यादा होता है पार्टिकल फिजिक्स में मैं पढ़ाता हूँ ये सब चीजें। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कंपोजिशन। शैल आई प्रोसीड? हाँ ना बोल दिया करो। Yes, sir. Now we learn that properties of nucleus. Properties of nucleus. Okay, so first we'll learn about that radius. Radius of nucleus. Radius of nucleus, and it is basically denoted by R. ठीक है. So it is observed that mass density, of nucleus is constant. दिख रहा है? बाहर वाला नहीं दिख रहा है ना? Mass density of nucleus is basically constant. Okay. So what I can say that mass density, if I take that symbol of mass density rho, so rho will be basically constant, means up some C. The mass density of nucleus is constant, that is C. And how will define that mass density? Mass per unit volume. And mass कितना है nucleus के पास? There are a number of nucleon, and if I multiply by mass of a proton, that will be the total mass of a nucleus. And volume nucleus is having a spherical shape, so I can say that volume will be 4/3 pi r cube, and that will be some constant C. Sir, this A into NP means A, what you have just told us now. Total mass will be how much? You tell me. Total nucleon will be how much? N plus Z. Yes, sir. एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? Mn है. एक प्रोटॉन का कितना है? MP. So total mass will be how much? N Mn plus total mass कितना आ जाएगा बताओ? N Mn plus Z Mp. और Mn जो and Mp जो होता है almost same होता है. So in place of Mn I can write Mp. Now I can take Mp common. So if you take N, you have taken A. Okay, sir. तो एक प्रोटॉन का मास Mp होता है, एक न्यूट्रॉन का Mn होता है, दोनों बराबर होता है ऑलमोस्ट. So total mass will be N Mp plus Z Mp, and if you take Mp common, N plus Z, that will be nothing but A. So total mass will be A Mp divided by 4/3 pi r cube, and that will be C. Now from here what I can say? Anyone? Any guess? So what I can write? RQ कितना आ जाएगा? बताओ. Can I write that RQ will be some MP? दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है ना? आज फोकस ठीक से नहीं हुआ. So can I write that RQ will be how much? That will be MP by 4/3 pi C. 4/3 pi C, and you will have A. Now you see, C is your constant, MP is also constant mass of proton. So this whole factor I can write some other constant, that is K. So it means R cube will be how much? Some K into A. So from here I can easily say that R will be proportional to A the power 1/3. A की power 1/3 है ना.
ये तो हमको पता ही है ना, आप लोगों ने पढ़े हो, बट ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कहाँ से आते हैं ये। So RQ is nothing but K into A. From here I can easily say that radius of nucleus is depends upon mass number, or I can say R will be how much, R naught a the power 1/3, जहाँ पे R naught का जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 फेम्टोमीटर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.2 फेम्टोमीटर होते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या इतना क्लियर है? बताओ। इज दिस क्लियर? शैल आई प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we'll calculate. Next part we'll calculate B, the mass density. Mass density of nucleus, and this is basically denoted by rho. So what I can say that rho will be how much? Total mass of nucleus, that is A into mp divided by volume of nucleus, that is nothing but 4/3 pi r cube, right? So you will have A into mp divided by 4/3 pi, and r is nothing but we have derived, that is nothing but r naught a की power 1/3 की power cube. Now you see this a की power 1/3 and you have 3 power, so this is nothing but a, I can cancel this. So basically you will have mp divided by 4/3 pi r naught cube, and mp is how much? 1.67 into 10 the power minus 27 kg. Okay, then you will have 4/3 pi is how much? 3.14, and r naught is of the order of 1.2 femtometer, so I can write 1.2 into 10 की power minus 15 का cube, and of course this unit will become kg per meter cube. This unit will become kg per meter cube. Okay, so basically solve, if you solve it, you'll get that rho value, and that will be 2.3 into 10 की power 17 kg per meter cube. Is this clear? Is this clear? For converting centimeter to liter, we have multiplied with minus 15, 10 to power minus 15. You have R naught, right? You are talking about this, right? Yes, sir. We know that R naught is nothing but around 1.2 femtometer, so I can write 1.2 into 10 की power minus 15. So you have a R naught cube, so I'll write 1.2 into 10 की power minus 15 की power cube. No, sir, I was asking that for converting femtometer to meter, you have multiplied with 10 to the power minus 15, no? Exactly, that thing you know, right? 1 femtometer is nothing but 10 की power minus 15 meter. Actually, your voice was not clear. Sir, Yes. Yes, sir. sir, according to this, mass density is independent from radius or atomic mass. Independent on radius. That's yes. Independent on radius. What I'm saying, जो आपका सपोज मान लो आपके पास हाइड्रोजन का एक ये है न्यूक्लियस से, और एक आपका सपोज मान लो कार्बन का न्यूक्लियस है ना? दोनों का रेडियस जो है अलग अलग होगा, बट इनका जो मास डेंसिटी है, दोनों का वो मास डेंसिटी 2.3 लिखा है ना? हाँ 2.3 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आपका? 2.3 आ रहा है, बट मुझे लगा वो 23 तो नहीं। अच्छा, हमेशा जो मेरा पॉइंट होता है ना काफी स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब तो मैं क्या कर रहा था कि दोनों का रेडियस डिफरेंट है, बट यू विल हैव सेम जो डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी जो होता है सेम होता है। प्लीज कीप इन माइंड, मास डेंसिटी सेम होता है बट चार्ज डेंसिटी डिफरेंट होता है, दैट विल कम। मास डेंसिटी जो होता है दोनों का सेम होता है, मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस का, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes. नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज व्हाट? प्रॉपर्टी सी, पार्टिकल डेंसिटी।
or I can say nucleon density. Nucleon density. And let us take that symbol rho n. Rho n means what? Nucleon density. What is the mean? Sir, Yes. sir, mass density of every nucleus would be same. That's what It I'm saying. is- If you take that nucleus, hydrogen nucleus, you will have that density. And if you have taken carbon nucleus and or other nucleus, that mass density will be almost same. Okay, mass density सर सर बस साइज का फर्क होगा. देखो मास डेंसिटी सेम इसीलिए होगा. देखो आपके पास एक हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन्स है? सॉरी, कितना न्यूट्रॉन है हाइड्रोजन में? एक ही न्यूट्रॉन है. सॉरी, एक ही न्यूक्लियन है. हाइड्रोजन में कितना न्यूक्लियन है? One nucleus. वन न्यूक्लियन है. तो इनका साइज कुछ छोटा होंगे. आपके पास कार्बन है. कार्बन में कितना न्यूक्लियन है? 6. कार्बन में 6 न्यूक्लियन है. 12. 12 न्यूक्लियन है. तो 12 इसका साइज भी बड़ा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी बड़ा है. इसका साइज भी छोटा है, नंबर ऑफ साइज भी छोटा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी छोटा है. तो एवरेज जो डेंसिटी देखोगे दोनों का बराबर ही है. मास डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. सर मेरा ना डाउट सिर्फ ये है कि R0 है, ये हर एक न्यूक्लियस के लिए, मतलब आपने 2 न्यूक्लियस को कंपेयर किया है, अगर मतलब R0 जो है वो डिफरेंट होएगा, मतलब आप डिफरेंट बताओ न्यूक्लियस R0 के का लिए. एक्सप्रेशन क्या था वो बताओ पहले आप. मैंने तो अभी डिराइव किया था. R0 क्या था एक्चुअली? बताओ, आप ही बताओ. R0 is 1 upon R0 कितना था? m if I am correct, upon A raised. mp divided by 4/3 pi, then you will have some constant number, right? यही तो था. सॉरी हाँ, ये जो आपका R0 आया था कहाँ से आया था एक्चुअली? यही से आया था. तो अब चेक. यही है. यस. हाँ, यही है ना. तो ये देखो सारे कांस्टेंट है ना. सो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट नंबर इज कांस्टेंट फॉर ऑल. ओके, तो फिर डेंसिटी फॉर एवरी न्यूक्लियस, सिर्फ 2 हाँ, न्यूक्लियस हमने कंपेयर मैंने, किए. हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना. जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस लोगे तो डिफरेंट न्यूक्लियस में क्या होगा? साइज डिफरेंट होगा बट नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी डिफरेंट होगा. जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ 2 न्यूक्लियन का एग्जांपल. हाइड्रोजन में 1 न्यूक्लियन है, उसका साइज भी छोटा है. और अब कार्बन है, कार्बन में 12 न्यूक्लियन है, उसका साइज भी बड़ा है. तो डेंसिटी निकालोगे दोनों का सेम ही आएगा. सिमिलरली वी कैन कंपेयर फॉर बिग नंबर आल्सो, है ना. ओके. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द न्यूक्लियन डेंसिटी? सर Number of nucleons per unit volume. नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है आपके पास? ए डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब. आर क्यूब मतलब कितना है? R0 a the power 1/3 cube. Again this a will be cancelled and you will get that number, and that will be how much? 1/4/3 pi. Pi is nothing but 3.14, right? Pi is nothing but 3.14, and you will have R0, and that is nothing but 1.2 into 10 to the power minus 15 power cube. ठीक है. So if you calculate this order, I have calculated. Okay. So we'll basically get this, or that order of number of nucleon, that will be 10 to the power 44 nucleons per meter cube. ठीक है. You can सर imagine. Yes. so one small size nucleus, neutron and proton is there, right? Exactly. And so nucleon means what, sir? Huh? Nucleon density means nucleon is also nucleus. Nucleon is not nucleus. Nucleon is number of proton plus number of neutron. Sorry, number of neutron plus number of proton. And that is the nucleus only, no, sir? No, not nucleus. Nucleus means एक नेम है. उसमें क्या है? प्रोटॉन है, Neutron plus proton. Okay, sir. सो नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब हर एक पार्टिकल को न्यूक्लियन बोला जाएगा. एक प्रोटॉन मतलब एक न्यूक्लियन है ना. एक न्यूट्रॉन मतलब एक न्यूक्लियन है. सो नंबर न्यूक्लियन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम. सो यू कैन सी दैट नंबर 10 की पावर 44. ऑर्डर यही आएगा 10 की पावर 44 न्यूक्लियन पर मीटर क्यूब. बट बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल दैट R0 का वैल्यू जो मैंने लिया हूँ 1.2 फेम्टोमीटर लिया हूँ, बट उसका एक छोटा सा रेंज होता है ना. आई टेल कि कुछ बुक में ऐसे वो एक ऑर्डर लेता है. आई एम नॉट श्योर.
If I'm wrong, let me correct that range. I think 1.0 to 1.2 फेम्टोमीटर ऑर्डर में लिया जाता है ना. बट डोंट वरी अबाउट दिस, आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा ये, ठीक है. ठीक है ना. So I think we should stop here. If you have question, you can ask me. Otherwise, I stop here. Shall I Sir, stop? which constant is R naught? Which constant is R naught? That I have written, right? R naught is like, you remember, MP divided by 4/3 pi, and you have, if you that you have, I have defined on C. C क्या था आपके पास? ये C क्या है actually? So this is the expression for R naught. R naught is nothing but MP divided by 4/3 pi, and C was actually what? Constant A into C you can say like C क्या होगा यहाँ पे बताओ? Some constant है ना? That depends upon what that mass density, right? C is your constant, है ना? So this is the expression, but no need to worry about this. This is the expression for R naught. I'll explain that R naught is nothing but mass of proton divided by 4/3 pi into C. और ये C क्या है? C हम लोगों ने define किया था कहाँ से? That mass density of all mass density. is constant. वहाँ से आया है ये. So actually, while deriving, you have taken this mass of proton by 4/3 pi, that you have taken K. That's why we are getting confused. You have to write R naught or K. Oh, okay. So better you can take that R naught there also. Then it will be, I That's think, more why we are fine, right? confused. Yeah, good. You can take that. Extremely sorry that Sir. I have taken different notation. Okay. Sir. Yes. सर अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो न्यूक्लियन डेंसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हो चुकी है ना? हाँ, इट न्यूक्लियन इज कमिंग कांस्टेंट. हाँ, एग्जैक्टली. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियन डेंसिटी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब, है ना? तो इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, देखो, like hydrogen has only one nucleon and the carbon 6 nucleon, so then how would it be possible that per meter cube would have 10⁴ nucleons? now tell me, आपके पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और एक आपके पास कार्बन न्यूक्लियस है, ठीक है ना? इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूक्लियन है. इसका वॉल्यूम मानो V1 मानो, और इसमें कितना है आपके पास? टोटल 12 है. Yes. 12 है ना? और इसका वॉल्यूम V2 मानो. अब बताओ आपको क्या निकालनी है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम कौन सा बड़ा होगा? कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा यहाँ पे? ऑब्वियसली ये वाला काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस. यस. तो इसके लिए जब न्यूक्लियन डेंसिटी करोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे न्यूक्लियन नंबर भी स्मॉल है, वॉल्यूम भी काफी छोटा है क्योंकि R स्मॉल है. इसके लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये दोनों नंबर सेम ही आ जाएगा. ओके. ठीक है ना? ओके. Sir, Yes. tell me. sir, is there any particular name for R naught, or otherwise we should learn MP upon 4/3 pi R constant? naught is some constant, you know. Yes, sir. R naught is some constant. Okay. Its name is not written. I don't think there is name. If there any name, tomorrow I'll tell. But I don't think so. There is some name. That is some constant number. Okay. Okay, sir. Shall I stop now? Yes, sir.